एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज मैं बात करने वाला हूं अबाउट माय एक्सपीरियंस ऑफ इंटरव्यू एट Beardo. Yes, recently I appeared for an interview of a key accounts manager role at Beardo and I got rejected. Yes, you read it correct. I got rejected in Beardo in the first level of interview itself, and what went wrong I am going to analyze in details because I retrospectively thought about it. I challenged myself, I challenged my own beliefs, and then I got a conclusion that why I got rejected at Beardo, right? So पहले मैं बता देता हूँ कि HR again approached me directly through the naukri.com and LinkedIn profile. I think I just happened to create my profile on Naukri as I told in the previous video as well. If you have not seen that video, that was a Kapiva interview video, तो वो देख लीजिएगा. Plus 1-to-1 session में आप मेरे साथ बात भी कर सकते हो just for 29 rupees, and I will share personalized stories with you and will make your profile for interview. So if you want to do that, just go in and book a session for yourself. So going straight away to the topic, जैसा कि मैंने बोला कि नौकरी से उनको मेरी प्रोफाइल मिली थी या लिंक्डइन से मिला था, तो उन्होंने मेरे को डायरेक्ट अप्रोच किया कि ये आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज. आई टोल्ड नॉट रियली, बट आई एम लुकिंग फॉर एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज इफ देयर आर एनी, एंड आई वांटेड टू टेस्ट माय मेटल दैट ओके एम आई गुड एनफ, राइट? नाउ यहाँ पे क्या हो जाता है कि पहला जो कॉल आता है वहां पे इंटरव्यू मतलब सीवी सब ले लेते हैं, सब इंटरेस्ट फॉर्म ले लेते हैं कि हाँ तुम इंटरेस्टेड हो, बट उसके बाद HR कांटेक्ट नहीं करती है. Like it's been a week or two, the HR does not get back to me, and hence I was like, okay, अब call नहीं आया तो मतलब maybe CV shortlist नहीं हुई and all of that. But then 1 week or 1.5 weeks later, I received a call from the HR saying that we were busy the last week due to some festive arrangements and stuff, and now the e-commerce head wants to take your interview. He is available. When will you be available? तो ये चीज हुई डिस्कस. अब प्रॉब्लम क्या हो गया कि उन्होंने बोला कि यार 5 PM के आसपास या 5 PM के अंदर कर लो. अब मैं रहता हूँ ऑफिस में, उस टाइम पे वीकेंड को इनका टाइम नहीं होगा, तो उन्होंने पहले तो ये डिस्कनेक्ट हो गया. फिर मैंने बोला कि अगर आपको करना ही है तो 5:30 6 o'clock के बाद करनी पड़ेगी, तो वहां पे टाइम नहीं बिठा. तो उन्होंने बोला कि 5:30 को कर लेते हैं. अब क्या हो रहा था, मेरी किस्मत इतनी खराब थी या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बोल लो, जिस भी दिन इंटरव्यू कंडक्ट हुआ उस दिन मैं ऑफिस में फंस गया किसी काम की वजह से. तो आई कुडंट कम बैक होम. First day when I actually tried to come back home, some meeting came up that got extended. I had to attend the interview from office. It was a bad connection, bad network connection. The interview was taken on Teams. Again, on my personal laptops, Teams does not work. I was joining Teams through web and I was losing connection. नेटवर्क इशू भी हो सकता है, टीम्स का इशू भी हो सकता है, एंड आई वाज लूजिंग कनेक्शन. सो सेकंड इंटरव्यू, उस दिन का इंटरव्यू ही नहीं हुआ बिकॉज मैं कंटिन्यूसली कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बफरिंग हो रहा है उनकी तरफ, उनको सुनाई नहीं दे रहा है. एंड देयर क्राइटेरिया वाज यू हैव टू कीप योर वीडियो कैमरा ऑन ड्यूरिंग द इंटरव्यू, राइट? यू कैन नॉट कीप योर वीडियो कैमरा ऑफ, नीदर कैन यू अटेंड द इंटरव्यू फ्रॉम मोबाइल, whatever reason it is, right? So I appeared, इंट्रोडक्शन दिया, फ्लो में आया, फिर वो सुन ही नहीं पा रहे. मैंने ड्रॉप बैक करके रीजॉइन किया, सुन ही नहीं पा रहे. टेक्निकल ग्लिच, चलो एक बार हो गया. सेकेंड टाइम इंटरव्यू गॉट रीस्केड्यूल्ड, दिस टाइम ऑन अ सैटरडे. आई स्पेसिफिकली रिमेंबर्ड a medical emergency came up. I had to go back to that medical emergency to attend that, and I couldn't come back home, and I called the HR. The interview got postponed. अगर मैं उस दिन शायद इंटरव्यू दे देता, शायद नेटवर्क कनेक्शन अच्छा आ जाता, शायद अच्छी राउंड भी चली जाती. सेकेंड टाइम इट गॉट रीस्केड्यूल्ड. नाउ देयर ब्लड इज ऑल्सो बॉइलिंग अप कि इतना क्या कैसा बंदा है भाई, पहली बार नहीं दे पाया, दूसरी बार खुद रीस्केड्यूल किया, तीसरी बार इंटरव्यू स्केड्यूल होता है. आई से दैट आई विल बी अवेलेबल, I couldn't make it. I got stuck in a office meeting. Again 5:30 के आसपास. I couldn't make it. Fourth time interview scheduled 5:30 के आसपास. I took an office room. Again network problem. I couldn't connect. Again technical glitch. Web से join किया, connect नहीं हो रहा है. और मैंने Google Meet भी arrange करने के लिए बोला था, but उनका ecosystem ही Teams का है, तो वो लोग they were not comfortable with Google Meet. अब मैं कुछ बोल रहा हूँ, उनको सुनाई नहीं दे रहा है, वो कुछ बोल रहे हैं, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है. फर्स्ट क्वेश्चन, सो इंट्रोडक्शन वगैरह तो हो गया, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन Beardo, वो भी हो गया, वो मैंने प्रिपेयर करके गया था कि हाँ ठीक है, मतलब यही है. फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट बाउंसर, फर्स्ट गूगली, यू कैन से कि यू आर इंटरव्यूइंग फॉर Beardo. दिस इज द ई-कॉमर्स हेड के साथ इंटरव्यू, यू आर इंटरव्यूइंग फॉर Beardo and there's a key accounts manager का role. So he was telling that you must be knowing the product portfolio of Beardo. Tell me more about it. Now the sales is easily visible on Amazon, Flipkart. Tell me how much we sold last month. I told that one of the units I was seeing that 20,000 plus बिका है. He asked me which कौन सा unit. I blanked out. I had studied कि कौन सा unit 20,000 plus बिका है.
but I told some other unit's name. Obviously you don't remember the SQ names properly, right? I told some other unit's name and then he was shocked कि ये भी का है, प्रूव करो, दिखाओ स्क्रीन प्रेजेंट करके. I failed utterly. एक तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा है, प्रेजेंट नहीं हो रही है स्क्रीन, ऊपर से वो बोल रहा है कि छोड़ दो यार. वो भी परेशान हो गया बंदा. I can't hear you, बार बार बोल रहा है I can't hear you, I can't listen to you, your screen is frozen. तो मैं जो भी बोलूँ उसको सुनाई नहीं दे रहा है. ऊपर से मेरी पहली आंसर ही गलत हो गई कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा बेस्ट सेलर है, कितने पीस बिके हैं, मैं नहीं बोल पाया बिकॉज ऑफ नॉट इनफ और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्टडी और बैकग्राउंड स्टडी. बिकॉज मेरे मन से भी वो चीज नहीं थी कि मेरे को इंटरव्यू सीरियसली देना है, राइट? आई वाज जस्ट एक्सप्लोरिंग एंड हेंस आई डिडंट स्टडी. आई जस्ट हैपेंड टू गो थ्रू देयर पोर्टफोलियो एंड आई डिडंट रिमेंबर मच, राइट? सो आई सेड अ रॉन्ग वेरिएंट. ठीक है, पहला वाला गूगली हो गया. अब इतना ही खराब कंडीशन हो गया, मैं ड्रॉप करके कंप्यूटर से आई ज्वाइन थ्रू मोबाइल, राइट? सो मोबाइल से कनेक्ट कर रहा हूँ. अब उसको दिख रहा है कि ऐसे बात करो, उधर भी नेटवर्क प्रॉब्लम, बात ही नहीं हो पा रही है. उसके बाद उसका सेकंड गूगली, अमेजन पे ब्रांड को ग्रो करना है, क्या क्या करते हो? मैंने बोला परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ये वो प्राइसिंग वगैरह. प्राइसिंग छोड़ दो, डिमांड प्लानिंग छोड़ दो, परफॉर्मेंस मार्केटिंग में कीवर्ड्स प्लानिंग छोड़ दो, और क्या करते हो? अब और क्या करते हो, मैं आई टोल्ड टैक्टिकल लीवर्स, ये सब बोलने की कोशिश करी, बट दैट इज नॉट व्हाट ही वाज इंटेंडिंग टू. ही वाज ट्राइंग टू गेट टू समथिंग व्हिच आई कुडंट अंडरस्टैंड ओनली. हिज क्वेश्चन आई कुडंट अंडरस्टैंड. और क्या करते हो, और क्या करते हो, परफॉर्मेंस मार्केटिंग में और क्या करते हो? अब प्रॉब्लम ये हो गई मेरे को बाद में जो समझ में आया कि आई ऑपरेट थ्रू एन एजेंसी. नाउ ही वाज आस्किंग मी क्वेश्चंस कि हीलियम 10 आप यूज करते हो, हीलियम 10 में कौन सा टूल से आप कीवर्ड एनालाइज कर सकते हो? टूल का नाम याद नहीं, बिकॉज हीलियम 10 लास्ट शायद 1 साल पहले ही यूज किया होगा. अब बोल तो दिया, पता नहीं एग्जीक्यूशन लेवल पे, बट हीलियम 10 यूज होता है वो पता है. अब मैं उनको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सर आई विल लर्न हीलियम 10, इट्स अ वन डे जॉब, इफ आई सी द इंटरफेस आई विल गेट इट, बट आई नो दैट हीलियम 10 वर्क्स लाइक दिस एंड दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट आई कैन गेट एंड आई कैन यूज दैट इंफॉर्मेशन टू ड्राइव इनसाइट्स एंड स्ट्रेटेजाइज. बट वो एग्जीक्यूशन लेवल पे पूछ रहे कि कौन सा टूल यूज करते हो, डिस्कनेक्ट. सेकंड आंसर नहीं दे पाया. थर्ड आंसर अमेजन पाई. अच्छा, अमेजन पाई कभी उतनी एक्सटेंसिवली यूज ही नहीं करी. रिच डेटा है, क्या क्या डेटा आती है वो मालूम है. वो पूछ रहे हैं अमेजन पाई का टूल बताओ, कौन सी क्या क्या इंसाइटिंग आती है, उससे क्या इंसाइट्स तुम डिराइव करते हो, नहीं बता पाया. थर्ड थिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग में क्या करते हो, कैसे ऑपरेट करते हो? वी ऑपरेट थ्रू एन एजेंसी. अरे भैया तुम क्या करते हो हैंड्स ऑन, तुमको क्यों लू? उस क्वेश्चन इज वेरी सफिशिएंट. आई वेंट इनटू सेल्फ डाउट, राइट? एंड देन आई थिंक 3 क्वेश्चंस ही आस्क्ड. अमेजन पाई कौन हैंडल करता है? आई टोल्ड एजेंसी prolifically. Then he asked helium 10 के tools, couldn't answer that. Then he asked performance marketing में keywords छोड़ के और क्या करते हो? Couldn't answer much. Then he told कि sales कैसे बढ़ाते हो? Couldn't answer much. And I blanked out. Literally after so many attempts, failed attempts, उसका एक perception build हो गया, मैं भी blank out कर गया, मेरे सारे answers भी गलत हो गए. 4 questions पूछे, 10 मिनट का इंटरव्यू लिया, and he told that's all I wanted to know, thank you very much. It was the shortest interview. It was an insult on the face कि आपको कुछ नहीं आता भैया, आप क्यों हो इस इंडस्ट्री में, और कुछ पता ही नहीं है. From that day, I got a reality check and I started studying more about the interfaces, more about performance marketing as a overall. वो भी मैंने थोड़ा थोड़ा करना चालू किया और extensively. अभी भी मेरे को आधी चीज़ें पता नहीं है, बट उस दिन मेरे को रियलिटी चेक भी लगा. बट मेरे को उस दिन वो गिल्ट में जाने के बाद एक चीज़ ये भी रियलाइज हुई कि आई एम नॉट लुकिंग फॉर एग्जीक्यूशन रोल्स. I am looking for strategic roles, and if I know the strategy, I will figure out the execution while I am executing. It will take some time more than an executioner, but a quick learner will always figure it out. But a person who don't know strategically what to do, they're simply executioners, will find it difficult to execute if they don't have a top-down saying what should be the strategy. So that day I understood I have to be in roles where I can strategize better, not an executional role, because I don't want to be there. That is not very appealing to me. I should know the execution part, but I shouldn't do it regularly. I'm okay with it. You cannot do everything. You cannot have fair share of the pie. If you know how a business is run on Google, Meta, performance marketing on the platform, off the platform, retail marketing, retail sales, अगर आपको ये चीजें पता है basic conception में, and you can strategize those things, then it is fair to go. That is good to go. You cannot know everything executional level में, or you cannot do executional level में. You can know, but you cannot do execution level में. If you go there, there are a lot of plenty of YouTube videos where you can learn and unlearn within 1 or 2 months. You should be a quick learner. So I felt that the person who was taking the interview was looking for an executioner rather than a person who can strategize, because I think hands-on थोड़ा job उस हिसाब से. तो that is what I felt, and that is why I got rejected. फेयर पॉइंट, मतलब मैं उसकी जगह होता और मेरे को वो रोल की रिक्वायरमेंट होती तो मैं डेफिनेटली अपने आप को हायर नहीं करता. ही वॉज वेरी वेरी क्विक एंड वेरी वेरी करेक्ट इन हिज जजमेंट. इट्स जस्ट दैट टाइम गॉट वेस्टेड ड्यू टू दिस मल्टीपल मीटिंग्स. शायद वो पहले मीटिंग में उसने 4 क्वेश्चंस पूछ के मेरे को रिजेक्ट कर देने थे, तो वो बहुत ईजी हो जाता है. एक तो परसेप्शन भी बिल्ड हो गया, मेरा भी ट्रैक्शन चला गया,
परेशान भी मैं बहुत हो गया, वो भी परेशान हो गया, उसने भी जज कर लिया, उसने फिर एचआर को भी गालियाँ दी होंगी, आई एम पर्टिकुलरली श्योर कि कैसे कैसे बंदे उठा कर ले आती हो, उसको कुछ पता ही नहीं है इंडस्ट्री का. But it is just that my friend, or if he is watching the video, if the HR is watching the video, I'm not executioner. I'm a strategist and I would like to be one. I would learn more of executing. You at least give me that hint that you need to learn more about execution part. You cannot be a simple strategist. Well taken, but I don't want to create the campaigns inside out if I'm scaling a business, because you cannot do everything. Yes, if I'm starting a business, more than happy to do it, but if I'm scaling a business, I do not want to do it. There should be sufficient amount of support. So that is what I felt, and I also now make it very clear to the HRs that this is what I'm looking for, this is what I'm not looking for, right? And that gives a lot of clarity and sense to them as well to operate. So that was my experience with Beardo interview. If you like it, share it with your friends, subscribe to the channel and hit the bells icon, because I will keep on bringing interview experiences, job experiences, vivas, GDs, everything that you can think of in business and outside business as well, I will bring on in this channel. And if you like the content, this deserves a like and share, and this deserves a subscribe as well. So thank you very much. That was it from my side for today. Bye bye.